Good morning to one and all. We now begin with our first panel discussion for the day with the theme Youth and Mission India at the rate 2047. This panel discussion will look at the deeper connotations, circumstances and contextuality of what we mean by the term acquiring developed nation status by 2047, as well as the strategies to involve the youth in policy planning, educational curricula, industry interface and governance formats. We invite to the stage our esteemed panelists for this session, Mr. Aditya Seshadrinathan, founder and MD of BASIS Fund Services Private Limited. BASIS ranks in the top 25 in the global fund administration in asset servicing private equity, venture capital, foundations and hedge funds. Dr. Shubhalakshmi Acharya, behavioral scientist and founder of Mind Elements, who has developed a unique capability and competency audit model that highlights business mind and leadership quotient. Our third panelist we invite on the stage, Mr. Pradeep Behera, founder and MD of Theta Beta and Algorithms Private Limited, which envisions to become a global player in scientific innovations. Mr. Ashutosh Kumar, CEO of Jagriti Enterprises Network and Jagriti Yatra, which is a 15-day, 5,000-mile entrepreneurship train journey that inspires youth to become entrepreneurs. Let me now introduce to you our moderator for this first session, Commander V.K. Jaitley, National Coordinator for Youth for Nation. Commander V.K. Jaitley completed his B.Tech with honors and M.Tech from IIT Kharagpur and worked extensively in the area of web marketing for his MBA. He is presently the board member of IIT Bhubaneswar, a representative of the Government of India, and is advisor with 3 departments at IIT Kharagpur. He dons many hats, being a motivational speaker, a consultant, a coach, a writer, and a mentor for the corporate world. He was the commissioning crew of INS Virat and contributed immensely in the computerization in the Indian Navy. He was the weapon maintenance officer and the officer in charge on INS Virat for the most sophisticated computer-aided action information system. Founder Dean of JP University of Information, as well as founder board member of Pan IIT India. Commander V.K. Jaitley has been the recipient of the Distinguished Alumni Award in 2021 by his alma mater, IIT Kharagpur, and continues to play many roles with equal excellence, whether it is researcher, organizer, writer, author, and social service pioneer. Over to you, sir, to begin the session. Thank you very much. And Aditya ji आए हुए हैं? Aditya ji is around? I think he has reached. That's the message. He's there. Aditya ji. Okay, no problems. So we will start straight away with this session. Now it's a very, very important session. Youth and Mission India at 2047. 2047 में हमारा हिंदुस्तान कैसा होगा उसके बारे में हमारे पैनलिस्ट बात करेंगे आज. So it's really great that we have 1, 2, 3, 4th panelist is missing. Let's hope. Oh, he is there. Yes, sir. Please come. Let's welcome Aditya ji. जोर से ताली बजा के वेलकम कीजिए. जो लोग लेट आते हैं उनका हम वेलकम जोर से करते हैं. ठीक है. No problems. कोई रोक नहीं सकता. अच्छा, great. Very good. So let me introduce my panelists also. आशुतोष जी मेरे एकदम दाईं तरफ बैठे हैं. एकदम सबसे यंगेस्ट दिखाई दे रहे हैं. Whether young है या नहीं वो मुझे मालूम नहीं है. He is the Chief Executive Officer at Jagriti, a non-profit focused on building entrepreneurship and innovation ecosystems in undeserved regions of India. And Jagriti Yatra is a 15-day, 5,000-mile entrepreneurship train journey to inspire youth to become entrepreneurs. बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जनाब आप. The initiative has impacted over 7,500 youth in the last 15 years. Great. And yes, जोर से ताली बजाइए फिर. बजानी है तो दिल से बजाइए. And he runs incubation programs. He fosters economic and social growth. He is a graduate from my college, IIT Kharagpur.
Great. Which hall? Which hall? Patel Halls. He's from Patel Hall, I am from RK Hall. Great. And let me tell you, IIT Kharagpur is the best IIT. And there's no doubt about that. Biggest IIT, the first IIT. And he is an IVLP, International Visitor Leadership Program by the US Government Fellow. He was a member of the India at 75 Task Force Skilling and Entrepreneurial. And he has been in CIE also and TEDx speaker. Great. We welcome you, Ashutosh ji. जोर से ताली बजाइए आशुतोष जी का. और प्रदीप बेहरा जी मेरे बिल्कुल बाजू में बैठे हैं. Another great man leading an organization called the Theta and Algorithms Private Limited. Yes. Theta Beta and Algorithms Private Limited. Thank you. He started as a freelancer in 2016. A facility has been established for product prototyping, which is as of now houses 40 persons, market survey, identification of products. He is doing a lot of job for the Indian Navy also, he told me in the morning. So, a lot of things are happening, and people like his company, for example, they have got some 15 products at various stages of execution. Domain expertise covers natural products, cosmetics, pharma, applied sciences, lot of revolutionary products, let me tell you. He is from IIT Bombay. Another great place. I was there last full 1 week. Excellent. He has been a gold medalist twice during his academic tenure, and he was a zonal topper in GATE examination, and he works very closely with physicians, few academic institutions, DRDO lab, CSR, Indian Navy, and many others. Originally from Odisha and now stationed in Bombay. Odisha se kahan se janab? Brahmpur. Brahmpur is a beautiful place. Great. So welcome Pradeep Behra ji. Zor se taali bajaiye Behram. And on my left side, flowing beard, जबरदस्त मुस्टैच तिलक लगा करके बैठे हैं आदित्य सेठ जी. He is chartered accountant by profession. He has been in fund services for more than 30 years with experience in international organization in the Europe, Caribbean and US. And I tell you, his profile is very long. I can't read the full. A first in Bharat, he has with his team implemented path-breaking strategy related to deploying Six Sigma and PERT CPM techniques for the first time in fund accounting industry itself. Sir, मैं नहीं पढ़ने वाला आपकी पूरी की पूरी, बहुत लंबी है, sorry. And he has ये सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है जी कॉर्पोरेट की ज़िंदगी में हम सब करते रहते हैं, मगर मेरे ख्याल से जो मैंने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में मैंने जो मुझे नियुक्त किया गया था वो सबसे बेहतरीन और महत्वपूर्ण. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अग्रतला त्रिपुरा में बहुत काम किया इन्होंने. He is a frequent speaker in the national Hindi channel programs and a prolific writer. Great, I tell you. मजा आ गया. उसके बाद हमारे बीच में बैठी हैं एक महिला. विदाउट लेडीज कुछ काम नहीं होता, जहां पर भी जाइए लेडीज का होना बहुत जरूरी होता है. शुभा लक्ष्मी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. इनके लिए शुरू में भी ताली बजाई जाए और फिर बाद में एक बार फिर ताली बजाएंगे. शुभा लक्ष्मी जी Acharya is the founder of Mind Elements and has developed a unique capability and competency audit model that highlights the business mind and leadership. She is basically behavioral scientist in both corporate and social area. And she identifying a leader from a performer is the USP of her. And I tell you, she is basically, I say, is a HR person. She has received a certificate from many places, many honors and awards she has, received from so many places. And if you ask me, her vision is to create a new age people force by providing insights on their business mind and leadership quotient to optimize performance in the business world. Thank you very much, madam. Once again, please welcome Subha Lakshmi ji. Now, with that quick introduction, we are running short of time, so I will go at a full speed. And I had requested them to speak for 7 minutes. Now I'm going to request them to speak for only 5 minutes. Okay? Because lunch bhi khana hai bhai.
So let me start now from the left side. Subha Lakshmi ji, I start from you. 5 minutes, totally yours. Please go ahead. Thank you, Commander Jaitley ji, for the warm introduction. And good morning to each one of you sitting here. Thoda sa louder? Okay. So I'm glad that I've been invited here and given the opportunity by HSNC University as well as Youth for Nation to speak on a very, very crucial topic, Youth and Mission India 2047. The most important asset of any nation is its people. However, they should have the right mindset linked to the job they are doing. They should have appropriate skills for doing the job and relevant education to understand the job. Now 2047 is going to see a new era peaking at its highest level where technologies will be disrupting business models, and it is only the mind that will create avenues to navigate through the uncertain future. Now, this reminds me of a quote by Sir Winston Churchill many years ago. The empires of the future is the empires of the mind. So if we want to excel the empires, what we have to do? We have to excel our mind. And it is not just excelling, it is expanding the mind. We have to crave for excellence. We have to create the mindset of excellence. How do you create the mindset of excellence? Is it born? Are you born excellent? No. But it is not something out of reach. It is intentional. It is up to you whether you want to excel or no. Now, if you see in your group, if you see some members excelling in their field, naturally you will want to be in the state of excellence. Am I right? Why only few people? Yes. Louder? Yes. So we are going to reach the Amrit Kal, and I want you all to pay attention to what I am going to tell you all now. In the morning, Dr. Chidambaram spoke about various scientists. I am going to tell you a story of Dr. Mashelkar, who is a world-renowned scientist in research, and he, in a program, described a story of his experience with his mentor, a guru, Professor C.N.R. Rao. Now, Professor C.N.R. Rao has won the Bharat Ratna. Except Nobel Prize, he has won all awards. Now, this is a very interesting story, and you'll get to learn a lot. Whenever Dr. Mashelkar used to get an honor, but naturally he would go to his guru to express, I have received this honor, expecting some kind of an appreciation. But Professor C.N.R. Rao, as usual, would say 2 words, not bad. Then when Dr. Mashelkar, he won the Fellow Royal Society honor, he thought, today I am going to really get some kind of an appreciation, and he went rushingly to him. And again, Professor C.N.R. Rao said, not bad. Then when he won the Foreign Associate by US Academy of Sciences, which has been received by only 7 Indians in 140 years. Generally, this award is received after a person receives a Nobel Prize. So he said, today I am definitely going to be applauded. He went again to Mr. Rao, and as usual, Professor C.N.R. Rao said, not bad. Now he really got frustrated. He decided, I'm going to ask Professor C.N.R. Rao, what is it that is going to satisfy him? And he asked him, sir, how should I satisfy you? And then he explained, he defined what is called as the limitless ladder of excellence. He said, there is no limit to excellence. You have to keep climbing the ladder of excellence. Your best is yet to come. So this was a great lesson that Dr. Mashelkar learned from his guru. And today I recently met him to invite him for an event. And he said that my events are booked 6 months in advance. He's so busy even today.
So the idea behind telling this story is that it is not only Marshall Gar, each one of you sitting here, if you all keep that in mind that you can excel, you can do it. Okay? Now, how do we achieve excellence? First and foremost is self-awareness. You have to know who you are. Knowing yourself is a discovery. Just not knowing what is your favorite color or a favorite music or dance is not enough. You have to discover who you are as a human being. You have to know what are your core values, your priorities in life, your strengths and weaknesses, your likes and dislikes, your desires and dreams, your tolerances and limitations, your fear and passion. All these factors start writing in your diary, because this will help you know what you are. You are unique, okay? You are not less than anyone else. Second, you have to find out what are the skills you have. Critically find out, are you able to solve a problem? Are you able to communicate properly? Are you creative enough? Are you a critical thinker? Are you adaptable to change? So there are many skill sets that are there. What are you? Where do you fall? You should revisit your performance. You should set high standards for yourself. You should be supportive. You should be collaborative. Synergy between members, helping each other to achieve excellence. Not just me, me, me. See that the others also excel. Only then the India that is 2047, we'll see it becoming the economic power of the world, one of the economic powers nations in the world. So the enablers for this excellence are discipline, focus, positive attitude, making the best use of your time, valuing time, and those who excel in life, they are the ones who lead a productive life. They are the ones who have high confidence levels. They have high self-esteem. They get recognition and praise. They enjoy healthy relationships. And finally, there is internal satisfaction. So my urge to you is keep repeating excellence again and again till it becomes ingrained in you. Thank you, madam. Thank you. So Thank you. this is my message for 2047, creating the mindset of excellence. Thank you. Great. Very nice advice given by Madam Subbalakshmi ji. If you follow this, I tell you, you will go to great heights. And one thing let me tell you, you people have come on this earth at a very, very right time. बहुत ठीक टाइम पे आपने जन्म लिया है. जब ये 2047 होगा, उस समय आप लोगों की एज कितनी होगी? लगभग 40-45 साल के आसपास. You will be in the prime of your career. हिंदुस्तान जब विश्व गुरु बना होगा और आप सोचिए कि आप इस देश को लीड कर रहे होंगे उस समय. And but that can happen only if ये जो अगले 25 साल है उसमें भी मेहनत करनी है जबरदस्त. और वो मेहनत हम लोगों ने कुछ हद तक फाउंडेशन लगानी शुरू कर दी है. कुछ हद तक हम लोग जो आगे चेयर में बैठे हैं यहाँ पर, सभी के जिनके बाल सफेद हो चुके हैं, वो होंगे या नहीं होंगे कुछ कहना मुश्किल है. होंगे तो अच्छी बात है, नहीं होंगे तो भी अच्छी बात है, लेकिन आई एम श्योर आप लोग होंगे यहाँ पर. एंड यू पीपल आर गोइंग टू really, make this India the real great in 2047. So, आज से एक एक क्षण, एक एक मिनट इस देश के लिए काम करना है आपको. Now coming to Ashutosh ji, all the experts are from different fields. You will realize that they are talking different areas, and all areas are equally important to make 2047 India a great nation in the world. Ashutosh ji, please go ahead. Thank Your you, time sir. starts now. Yeah. Thank you. So, I will just start with a small story. एक छोटी सी कहानी है. हम लोग यात्रा करते हैं. 15 दिनों की 8,000 किलोमीटर की एक वार्षिक यात्रा होती है, जिसमें आप जैसे लोगों को 20 से 27 साल के जो युवा हैं, जिनमें उद्यमी बनने की ललक है, उनको हम लेकर जाते हैं पूरे देश भर से. और देश के छोटे प्रांतों से, गांव से, शहरों से ज़्यादातर लोग आते हैं, बिकॉज़ हमारा मानना है कि इंडिया ये सिर्फ शहरों में नहीं बसता है, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, बल्कि इसके बियॉन्ड है, और उस भारत को हम लोग जगाना चाहते हैं. तो इस यात्रा की शुरुआत मुंबई से होती है. ट्रेन यहाँ से शुरू होती है हर साल 25 दिसंबर को CST स्टेशन से. सो एक बार की बात है, सारे लोग यहाँ पे एकत्रित हुए थे. लगभग 500 लोग इस पर ट्रैवल करते हैं.
और हम ट्रेन का वेट कर रहे थे रात को 12 बजे। ट्रेन हमारी आने वाली थी। पूरे 19 डब्बों की एक पूरी ट्रेन होती है जिसको हम हायर करते हैं और देश भर में ले जाते हैं। आप में से काफ़ी लोग को एक वो गाना याद होगा, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, जिसमें एक टीचर अपने बच्चों को लेके पूरे ट्रेन में यात्रा करता है। तो वैसी ही है कहानी। तो मुझे एक लड़की मिली, 22 साल की थी, वो किसी देश के उस मूवी का नाम भी जागृति था। जागृति था जी। करेक्ट। तो एक लड़की थी 22 साल की, वो आई थी और मैंने उससे पूछा तुम इस यात्रा में क्यों आ रही हो, तुम्हारा आने का पर्पस क्या है। और उसने मुझे बड़े ही सरल शब्दों में कहा कि मैं कन्फ्यूज्ड हूँ, मैं भ्रमित हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ, आई डोंट नो, सो आई एम कन्फ्यूज, दैट्स वाई आई एम कमिंग। आई टोल्ड हर वेलकम, द यात्रा इज मेंट फॉर पीपल लाइक यू हु आर कन्फ्यूज्ड एंड हु आर ओपन टू एक्सेप्ट देयर कन्फ्यूजन, राइट। वो यात्रा पे आई, 5-6 दिन यात्रा पे ट्रैवल की। 5-6 दिन बाद हम नालंदा में पहुँचे। नालंदा में जो वहाँ की पुरानी यूनिवर्सिटी है वो हम विज़िट करते हैं। और 1 जनवरी का दिन था, पूरा कोहरा था वहाँ पे। प्लेटफॉर्म पे मैं उस लड़की से फिर से टकराया और मुझे वो सवाल याद आया। तो आई आस्क्ड हर कि व्हेन यू स्टार्टेड द जर्नी यू आर कन्फ्यूज्ड, what is the state of your mind now after traveling with 500 people, going to so many places, meeting so many inspiring role models of the country? तो उसने मुझे उतने ही सरल शब्दों में जवाब दिया कि when I started I was confused, today I am confidently confused. And that was something I was trying to decipher, what did she mean, but by the time I could have asked her, she was disappeared into that fog. But that left me thinking कि क्या इसका मतलब है। My interpretation is कि जब आप अकेले होते हो, कुछ करना चाहते हो, आपके दिमाग में 100 विचार चल रहे होते हैं, you feel confused. But when you are with people, when you are with a community of like-minded, when you are with a network of passionate people, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, एक उत्साह आता है। आपका कन्फ्यूजन हो सकता है रह जाए, लेकिन फिर भी आपको दिखता है कि मैं अब आगे बढ़ सकती हूँ या बढ़ सकता हूँ, मेरे पास इतना एक बड़ा समूह है, इतना बड़ा नेटवर्क है मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो दैट्स व्हाट यात्रा इन जनरल, आई मीन ट्रैवलिंग इन जनरल गिव्स यू। इट गिव्स यू दैट कॉन्फिडेंस इनफ टू कीप ऑन meandering, to keep on traveling through your confusion. So that's what Yatra does. We have been doing for last 15 years. I just want to say 3 things before my time gets up. कि अगर 2047 की हम बात कर रहे हैं, अगर हमें भारत को बनाना है, हम लोग आँख मूंद करके पाश्चात्य सभ्यता को कॉपी नहीं कर सकते, right? And lot of things we are trying to do or we have done in the past is simply aping or copying the Western. We are a 5,000-year-old civilization. We have our own inherent strength. हमें उसको समझना होगा। और इसलिए 3 चीज़ें मैं कहना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट इज़ whenever we talk about entrepreneurship, we automatically talk about the big unicorns. Unicorns is simply a copying the Western civilization. It has never been in our own ethos. हमें और इसलिए हम लोग जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं उद्यमिता, which is more inherent to our culture, जहाँ पे शुभ लाभ की बात की जाती है, न कि ओनली प्रॉफिट फॉर योर इन्वेस्टर। तो कैसे हम पर्पस अबव प्रॉफिट हमेशा रखें, और देश में काफ़ी उदाहरण हैं। टाटाज आर द बिगेस्ट एग्जाम्पल विच हैव प्रोवन दिस। द सेकेंड पॉइंट इज देन कम्युनिटी, कि कैसे हम जो भी कर रहे हैं समुदाय को, कम्युनिटी को साथ लेकर चलें, न कि सिर्फ हम अपने बारे में सोचें, अपने से बियॉन्ड सोचें। और आप जब देखेंगे, जब आप अपने बारे में सोचते हैं, कन्फ्यूजन आपका बढ़ता है। द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग बियॉन्ड योर सेल्फ, यू बिकम कॉन्फिडेंटली कन्फ्यूज्ड। और तीसरी चीज़ मैं कहूँगा, खासकर आप जैसे यंग लोगों के लिए, बिकॉज आई हैव बीन इन दैट स्टेज, टेकिंग रिस्क इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट? Sitting in a room and clicking a bell icon on YouTube or doing a like on Facebook is not taking risk. Go out, venture, adventure. आप जाइए, और यही समय है, 20 से 27 साल, 30 साल का एक बड़ा ही सुनहरा समय होता है जब हम लोग रिस्क ले सकते हैं आंख बंद करके, क्योंकि उस समय आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तो गो आउट, टेक रिस्क, एक्सप्लोर, फाइंड व्हाट योर कॉलिंग इज, एंड देन डेडिकेट द नेक्स्ट डेकेड या उसके बाद का पूरा जीवन काल जो भी आप करना चाहते हैं। थैंक यू। और थैंक यू वेरी मच आशुतोष जी, बिल्कुल ठीक बोला इन्होंने। हालांकि ये जो हमारे पास गैजेट्स हैं, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, वी लर्न ए लॉट थ्रू गूगल, देयर इज़ नो डाउट। लेकिन जो आप मैदान में जा कर के सीखते हो, बिल्कुल उन्होंने ठीक बोला। तो जिस प्रकार की ये रेल यात्रा ऑर्गेनाइज करते हैं, आई थिंक इज ग्रेट आइडिया। अगर
मौका मिले तो मुझे भी इनवाइट कर लीजिएगा अगली बार, मैं भी जाना चाहूँगा और आप लोग भी वॉलंटियर कीजिएगा, पता करके कैसे उसके लिए एनरोल करना है, क्या करना है. इट्स अ ग्रेट आइडिया, आई टेल यू. यू मस्ट डिस्कवर योर ओन कंट्री. हम लोग कई बार बाहर की बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, देखते हैं, ये नहीं पता कि हमारे हिंदुस्तान में कितनी सुंदर सुंदर जगह हैं. लोग स्विट्जरलैंड की बात करते हैं, आप उत्तराखंड में जाकर के देखिए, ब्यूटीफुल प्लेसेस. कश्मीर में जाके देखिए, ब्यूटीफुल प्लेसेस. मैं अभी कश्मीर होके आया हूँ 1 महीना पहले, पूरा 1 वीक कश्मीर में था. बाय द वे, यहाँ पर इन लोगों ने मेरी थोड़ी इंट्रोडक्शन तो कर दी, थोड़ी और मैं बता देता हूँ. माई स्कूलिंग हैज़ बीन इन JNK, जम्मू कश्मीर में. तो मैं उसको दोबारा डिस्कवर करने के लिए JNK गया था, देखने के लिए. जम्मू तक तो मैं जाता रहता था, लेकिन श्रीनगर में जाना थोड़ा सा मुश्किल लगता था कि जहाँ पर आतंकवाद है, ये है, फायरिंग हो रही है. दिस टाइम आई सेड लेट मी गो टू कश्मीर. सो आई वेंट टू कश्मीर. ब्यूटीफुल प्लेस, आई टेल यू. एकदम वहाँ पे चारों तरफ तिरंगा झंडा लहरा रहा है, चारों तरफ एकदम शांति है. 370 तोड़ने के बाद तो जिसको बोलते हैं बल्ले बल्ले हो चुकी है वहाँ पर. इट्स अ ग्रेट प्लेस. एंड उत्तराखंड इज अनदर ग्रेट प्लेस. हिमाचल की पहाड़ियाँ, मज़ा आ जाता देखने में. ओके, कमिंग बैक नाउ, मे आई रिक्वेस्ट आदित्य जी to please go ahead and enlighten the audience. नमस्ते, वंदे मातरम. और जोर से, और जोर से, और एक बार. Do you all love your motherland? More, I need to hear. So then, now, very good. So now I will just repeat that in Hindi and say Namaste Sada Vatsale Matrubhumi. Bolo bolo, Namaste Sada Vatsale Matrubhumi. So all that is told to us are very simple words, पर हम उसको अलग अलग रंग दे देते हैं. अगर आप उसका अर्थ जानो तो आपको लगेगा ये आपका हृदय के कितना करीब है. ओके, तो मंचासीन सभी व्यक्तिगण को मेरा हार्दिक और सादर प्रणाम. सभी विद्वान है तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 5 से कम बोलूँगा और बाकी मुनाफा आपका होगा. चिंता मत करो, मैं आपको तो पहला चीज़, आप लोग स्टूडेंट्स हो तो मैं एक गुजारिश करूँगा आप लोगों से कि आप भारत से भागे हुए भारतवासी मत बनना. BBB. Okay? So why am I saying this? Because world over, the opportunities lies in this country. And while you can even take an EMI and visit places abroad, but remember the action point is in this country. जो सुनहरा भविष्य है वो यहाँ है और कहीं नहीं. तो आप जाओगे, देखोगे, और हमारे जैसे मूर्खता मत करना. 30 देश जाके हमें ये ज्ञात हुआ कि यहाँ ही सबसे अच्छा है, तो मूर्खता को सीमित रखना चाहिए हमें. So anyway, so the single point that I want to tell you is that the future lies here. Work for this country, you will make money, you will carve out your wealth. यहाँ पे आपको अवसर मिलेंगे, आपको कोई कमी भविष्य में इस देश से नहीं होगा. 2047 में जैसे हम हो जाएंगे उसका आज हमें कल्पना करना पड़ेगा. तो ये जो मंच आज बुलाया गया है ये एकदम, मैं कहता हूँ, सही है, क्योंकि आगे का भविष्य देखने के लिए कल्पना चाहिए, इमेजिनेशन चाहिए, पैशन चाहिए और सबसे बड़ा विश्वास चाहिए. आप लोगों का जो पीढ़ी है बहुत ही भाग्यवान है, क्योंकि इस पीढ़ी में आप लोगों को एक माहौल मिला है जिसमें ये सपने से यथार्थ हो जाएगा. फ्रॉम ड्रीम्स टू रियलिटी. You know, the gap between dream and reality in this generation is going to be very, very little. मतलब जो आप चाहोगे वो होगा, provided आप उसके लिए काम करोगे. So, you know, these are the very little words with which I want to leave you with. You are in an amazing era where the focus is going to be upon you. I mean, if you realize,
आई टुक अ फोटोग्राफ ऑफ यू ऑल। नॉर्मली वहाँ पे बैठे हुए दर्शक फोटोग्राफ लेते हैं, मगर ये उल्टा है, क्योंकि भविष्य में जो लाइट होगा वो आप लोगों के ऊपर होगा। ये सोचना जैसा आपका परिवार वैसा ही होगा सरकार। इट्स नो डिफरेंट। Earlier they used to say yatha raja tata praja, now it is ulta, now it is yatha praja tata raja, meaning just as the citizens are, so will the governance be. So therefore please understand that you have such a major role to play. It is not without a reason that you have been born in this country. I leave you with this words, Vande Mataram. हेलो, थैंक यू वेरी मच आदित्य जी। आदित्य जी ने अपने विचार बड़े संक्षिप्त रूप में रखे। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर बोलना चाहूँगा। इन्होंने बोला सुनहरा भविष्य यहीं पर है, उसमें कोई दो राय नहीं। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बढ़िया कंट्री है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं भी काफ़ी घूम चुका हूँ, और जब मैंने IIT खड़गपुर से बीटेक किया तो आपकी जानकारी के लिए आई हैड डिसाइडेड दैट आई विल जॉइन इंडियन नेवी। तो मैंने IITian बहुत कम लोग नेवी वगैरह ज्वाइन करते हैं, and I was one of them who joined Indian Navy. And जो लोग उस समय हिंदुस्तान छोड़ करके US में जाते थे, हम लोग हॉस्टल में, मैं उनको एटलीस्ट गद्दार बोलता था कि तुम सारे देश के गद्दार हो। You have been taught at the expense of the poor taxpayers' money, and you are now running away from here, going abroad, just because the life is easier there, greener grass. तो ऐसा हमारी बहस वगैरह होती थी, फिर भी जिसको भागना था भाग गया वो। नाउ ये अलग बात है कि वो लोग आज यहाँ पर आना चाहते हैं पर आ नहीं सकते, वो अलग बात है। अब दूसरी बात, मेरी माइंड थोड़ी थिंकिंग चेंज हुई एक लेवल पे आकर के। 1979 में मैंने बीटेक किया था, देन जॉइन इंडियन नेवी। 1986 में आई हैपन टू गो टू इंग्लैंड फॉर ब्रिंगिंग INS विराट शिप। INS विराट का नाम सुना सभी ने? एयरक्राफ्ट कैरियर। सो आई एम वन ऑफ दोज हु ब्रॉट दैट शिप फ्रॉम इंग्लैंड। तो वहां पर लगभग मुझे 16 या 17 महीने रहने का मौका मिला इंग्लैंड में। उस समय मेरा माइंड थोड़ा सा चेंज हुआ। देयर इज अ प्लेस कॉल्ड साउथ हॉल, वो पंजाबी लोगों का गढ़ है इंग्लैंड में। वहां पर एक बुढ़िया पंजाबी लेडी एक गोरे अंग्रेज को आदेश दे रही है, ओए इन्नू चुक के ओथे रख दे, पंजाबी में, एंड ही डज इट। ही अंडरस्टैंड पंजाबी एंड ही डज इट। आई वेंट टू एन एरिया कॉल्ड वेम्बले, फुल ऑफ गुज्जूस, बड़े बड़े स्टोर, फर्स्ट क्लास, एंड दे आर कंट्रोलिंग एंड दे आर एम्प्लॉइंग द ब्रिटिशर्स आल्सो इन दिस शॉप्स। तो उन लोगों से बात करते हुए पता चला, वो कहते हैं सर इन लोगों को तो हमने 200 साल में यहाँ से बाहर कर दिया हिंदुस्तान से, ये हमको 2000 साल में भी नहीं निकाल सकते यहाँ से, हम इतने ज़बरदस्त जम गए हैं यहाँ पर। तब मेरा माइंड थोड़ा चेंज हुआ। एक तो इंग्लिश लोगों के लिए जिनके बारे में मेरे मन में थोड़ी सी हेट्रेड भी थी, मैं कहूँगा, आई विल से आई गॉट रिड ऑफ दैट हेट्रेड बिकॉज आई लर्नड कि दे हैव मेनी गुड क्वालिटीज ऑल्सो। वो बंदा जब कोई बात बोलता है तो उसके ऊपर वो अटक करता है। हमारे नेवी में अगर कोई मान लो रडार खराब हो जाए, मैग्नेट्रॉन, अच्छा ये फॉर्म भरिए, ये भरिए, उसका अप्रूवल लीजिए, उसका अप्रूवल लीजिए, ये करिए, उसके बाद इक्विपमेंट आती थी और तब रडार ठीक होता था। उनका बंदा फ़ोन उठाता है और सीधा कहता है जी पैटर्न नंबर सो एंड सो सर, दिस थिंग आई नीड इट, ओके जेंटलमैन आई एम डिस्पैचिंग इट, प्लीज डू द फॉर्मेलिटीज लेटर ऑन। फॉर्मेलिटीज होती रहेंगी लेकिन काम इमीडिएटली हो जाता है। सो आई लर्न सो मेनी गुड थिंग्स आल्सो फ्रॉम दोज पीपल। और फिर जो हिंदुस्तानी जा करके वहाँ पे सेटल हो रहे हैं, और अभी तो प्रधानमंत्री भी हमारा है वहाँ पर, यूके का प्रधानमंत्री हमारा है हिंदुस्तानी, और अमेरिका का भी प्रधानमंत्री थोड़े दिनों बाद शायद हिंदुस्तानी हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने अभी अपनी फिलॉसफी चेंज कर दी है। मैं कहता हूँ भाई साहब दुनिया के किसी भी कोने में जाओ और जम जाओ, लेकिन आपकी जो अम्बिलिकल कार्ड है वो अपने देश के साथ बंधी रहनी चाहिए। अपने देश को भूलना नहीं, अपनी मातृभूमि को भूलना नहीं, उसके साथ आपका संपर्क बना रहे। आज अगर मोदी जी दुनिया में जाते हैं और मेडिसन स्क्वायर में इतना बड़ा जबरदस्त धमाल होता है, बिकॉज द इंडियंस हु आर सेटल्ड देयर अब्रॉड,
दे मेक ऑल द अरेंजमेंट्स। दुनिया के किसी भी कोने में जाते हैं तो हिंदुस्तान की जय जयकार होती है बिकॉज ऑफ दिस डायस्पोरा जिसको बोलते हैं हम, उनके कारण। तो मेरी फिलॉसफी आज की तारीख में है, इफ यू गेट द अपॉर्चुनिटी इन एनी पार्ट ऑफ एनीवेयर इन द वर्ल्ड, प्लीज गो, नो प्रॉब्लम। लेकिन हिंदुस्तान के साथ आपका संबंध बना रहना चाहिए। हिंदुस्तान के साथ प्यार, हिंदुस्तान की संस्कृति के साथ प्यार, वो हमेशा रहना चाहिए। उसमें कोई नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। एग्रीड? एग्रीड? सो गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड, पूरा विश्व हमारा है। जब हमको विश्व गुरु बनना है 2047 में, तो पूरे विश्व के अंदर भी हमको गाइडेंस देनी है। आज योगा 180 कंट्री में मनाया जाता है, 180 कंट्रीज में योगा। G20 के दौरान आपने देखा होगा वसुधैव कुटुंबकम लिखा हुआ था उसमें जगह जगह पर। थोड़े दिनों के बाद यूनाइटेड नेशंस का भी ये मूल मंत्र बनने वाला है। ज्यादा दिन नहीं है, थोड़े दिनों के बाद वसुधैव कुटुंबकम, बिकॉज इससे बढ़िया और कोई नारा हो ही नहीं सकता। The best Vasudhaiva Kutumbakam, that the whole world is one family. We all belong to the same Almighty. Same Almighty has created all of us. That alone can bring global harmony in this world. और मैं चाहूंगा जब हिंदुस्तान 2047 के अंदर विश्व गुरु बने तो पूरी दुनिया में ग्लोबल हार्मनी होनी चाहिए। ये लड़ाई झगड़े इस टाइप की चीजें खत्म हो जानी चाहिए। विदाउट गोइंग फर्दर, प्रदीप बेहरा जी, प्लीज गो हेड। थैंक यू जेटली सर। नमस्ते। सो बिफोर आई स्टार्ट माई नोट, दो इंसिडेंट याद आ गए ये करंट सिनारियो में। 4 साल पहले इनके जागृति यात्रा में मैंने रजिस्टर किया था। कहीं ना कहीं मैं भी इंस्पायर्ड हूँ इनके जागृति यात्रा से। थैंक यू। सेकेंडली, चिदम्बरम जी का जो अभी प्रेजेंटेशन था, एटमॉस्फेयर पूरा न्यूक्लियर हो गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो ड्यूरिंग माई उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर डेज, हम 30 लोग आए थे BARC में ट्रेनिंग लेने के लिए। स्टडी टूर था, 20 days we were given full demonstration of BARC. Mesmerizing था। Till now I can vouch for it. BARC is one of the places where you will feel like a lot of peace is there. For a scientist, you can imagine how does that feel to you. Now coming to the talk. I personally have come from a middle class family. My father is a retired high school headmaster. A leaving job to start a company on our own is not in the dream itself. So while starting, I had a lot of issues, challenges which I faced. Later it has been overcome. जो मैंने sort of झेला है, उसी को कुछ प्रोसीजरल सेगमेंट में मैंने प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। There are 3 parts to it: approach, then youth, then possibilities. ये जो टॉपिक है हमारा, इस टॉपिक को मद्देनज़र रखते हुए यूथ मिशन इंडिया एट 2047 मैं कुछ प्रेजेंट करना चाहूँगा। सो फर्स्ट वन इज़ अप्रोच। ऑन द अप्रोच सेगमेंट, to be an entrepreneur, to start something, you have to have a belief to whether you can do it. So break the mind state of possible नहीं है. If you think it is possible, then you can do it. So first of all, you have to think in a positive mindset. We live in a very complex society. In my view, I divide them into 2 categories. One is believers and one is followers. मैं चाहूँगा आप लोग बिलीवर के कैटेगरी में आए। फॉलोअर होना गलत नहीं है, बट ट्राई टू बी ए बिलीवर फर्स्ट। आप अगर कर सकते हैं तो करना पड़ेगा। सो मिशन 2047 कैन बी ड्रिवन विथ ए वेल आर्टिकुलेटेड विजन। आप कोई अगर ड्रीम रखते हैं तो मेक इट इन ए सेगमेंट वाइज। एक विज़न को मीट करना, लॉन्ग टर्म विज़न को मीट करना दूर से पॉसिबल लगता नहीं है। मेरा आप लोगों को गुजारिश रहेगा, मेक इट माइलस्टोन वाइज। आप अगर एक विज़न को लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर सकते, फिर वो प्रेशर झेलने का ताकत भी होना चाहिए। अगर नहीं है, then in that scenario you make it milestone wise so that you will have mid-term successes also. All innovations is going to take some time. आपको राइट स्किल सेट चाहिए, राइट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली एक इकोसिस्टम चाहिए। मैं नॉर्मली इकोसिस्टम के ऊपर बहुत स्ट्रेस देता हूँ। नाउ बोथ स्किल सेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी थ्रू प्लग एंड प्ले। व्हेन आई से प्लग एंड प्ले, आपको
परमानेंट एसोसिएशन की ज़रूरत नहीं है, बट व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ इकोसिस्टम। इंटरनल इकोसिस्टम, एक्सटर्नल इकोसिस्टम, दो टाइप के होते हैं। इंटरनल इकोसिस्टम कैसा होता है कि व्हेन यू एंटर योर वर्क प्लेस, आपको वो एनर्जी रहना चाहिए कि आप वो इनोवेशन को ड्राइव कर सको। अगर नहीं है तो वो सस्टेनेबल होगा ही नहीं। आप जो भी करो, एट द एंड ऑफ द डे यू आर नॉट गोइंग टू सी द लाइट ऑफ द डे। एक्सटर्नल इकोसिस्टम इसलिए इम्पोर्टेंट है, यू कैन नॉट डू एवरीथिंग। आपके पास कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, कुछ लोग हैं, और क्या करोगे आप अगर आप वो इकोसिस्टम एक्सटर्नली मैनेज नहीं किया या कोलैबोरेट नहीं किया, अगर हम एक जनरल टर्म में बोलेंगे, देन यू मे नॉट सक्सीड बेस्ड ऑन योर एस्पिरेशंस। सब लोगों को अपना अपना पार्ट निभाना है, सब लोग सब कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट सेगमेंट यूथ है। Am I running out of time? I'll take 3 minutes. Okay, youth. I'm not an expert in commenting on the youth scenario, but I'll give you some example. During my earlier days, I got selected through GAT in IIT Bombay, and मैं IIT Bombay में इसलिए आया कि मेरे सीनियर्स आए थे और कोई एक रीज़न नहीं था। मेरा अगर वहाँ पे बस चलता तो मैं प्रोबेबली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में पीएचडी करता। हालांकि आज के डेट में मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, बट पॉइंट इज़ आपके पास वो एवेन्यूज़ हैं अभी डिसाइड करने के लिए। मेरा एक बिजनेस कलीग है, उसके एक लड़का लड़की है, 11 साल और 14 साल। लड़का अभी फुटबॉलर बनना चाहता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलता है, लड़की फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट बनना चाहता है। मुझे ना गूज़बम्स आ जाते हैं ये सब सुन के। हमारे ज़माने में वो इकोसिस्टम था ही नहीं कि हमको कोई बता सके क्या करना है। जैसे मैंने बोला, सीनियर को देख के चला गया। और वहाँ पे भी मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना था। 2004-5 में एक रिसेशन आया था, इसलिए मैं फार्मा केमिकल सेक्टर में गलती से आ गया। सो दिस इज़ हाउ द ड्रीम आपके लिए लिखा जाता है। नाउ यू आर इन ए सिनारियो और इकोसिस्टम वेर यू कैन राइट योर ओन ड्रीम्स। थर्ड है पॉसिबिलिटीज़। पॉसिबिलिटीज़ को मैं 3 तरीके से डिवाइड किया है। एक है कॉन्सेप्ट्स कन्विक्शन, दूसरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एंड थर्ड है कंट्रीब्यूशन टू नेशन। मैं 2 मिनट और लूँगा सर। फर्स्ट वन इज कॉन्सेप्ट एंड कन्विक्शन। या मैं कंप्लीट करूँ? ओके, कॉन्सेप्ट एंड कन्विक्शन क्या है सर? करंट ट्रेंड में कॉन्सेप्ट्स की कोई वैल्यू नहीं रहता। आप समझ लीजिए, आप अगर कोई कंपनीज में डील करते हैं या एमएनसीज में डील करते हैं या इंडियन कंपनीज में डील करते हैं, कॉन्सेप्ट्स की कोई वैल्यू नहीं है जब तक आपका उसके ऊपर कन्विक्शन ना हो। तो उसके ऊपर फोकस रखिएगा, कन्विक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंडिया में ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को वैल्यू दिया नहीं जाता। लोग जोक करते हैं इंडिया के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के सिनारियोज के ऊपर। मैं ये आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप रूल रेगुलेशन के ऊपर बाद में जाइएगा, बट रेस्पेक्ट अदर्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ताकि लोग आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर रेस्पेक्ट देंगे। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। और कोई कुछ नहीं करने वाला। अगर मैं चोरी करके कुछ रिसर्च करता हूँ, बंद करिए। आप जब तक रेस्पेक्ट नहीं देंगे दूसरे के रिसर्च को, आपको वो रेस्पेक्ट मिलेगा नहीं। दैट्स ऑल, टाइम इज रनिंग आउट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रदीप जी। प्रदीप जी ने थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लिया, बट चलेगा, डजंट मैटर, नो प्रॉब्लम्स, परफेक्टली फाइन। ठीक है, या आपका टाइम थोड़ा जुड़ रहा है, यस करेक्ट, चलेगा, नो प्रॉब्लम्स। नाउ इन्होंने एक चीज़ बोली बहुत बढ़िया, इकोसिस्टम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप बढ़िया से बढ़िया भी क्वालिटी का बीज लेके आ जाइए, अगर वो ज़मीन को अच्छी तरह से तैयार नहीं किया गया, तो क्या वो बीज बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का भी हो तो क्या वहाँ पर उसका पेड़ या जो भी पौधा लगेगा? नहीं लगेगा। तो यू हैव टू प्रिपेयर द ग्राउंड आल्सो, यू हैव टू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट आल्सो। उसकी कुड़ाई करनी पड़ेगी, खाद डालनी पड़ेगी, पानी डालना पड़ेगा, सब डालना पड़ेगा। उसके बाद बढ़िया क्वालिटी का बीज डालिए तो वो बीज भी वहाँ पे प्रफुल्लित हो जाता है। I know number of people, my own batchmates, other friends, etc., who were very good. They were doing excellently in one particular company. One fine day, another company gave them a very good offer and they just changed there. लेकिन somehow उस कंपनी में जा करके वो सक्सेसफुल नहीं हुए, because environment was different. It was not, gelling with their philosophy of life. So whenever tomorrow, when you go to the industry, you change your jobs. Just because somebody is offering you a few more rupees, don't change. Or dollars, whatever it is. Yes, correct. So think about that environment also, whether the environment is good, whether it suits my philosophy.
Or will not they tell me to compromise with many things? If it suits your policy, philosophy and all that, yes, please go ahead. So ये जो ecosystem है, that environment is very very important. Innovation takes time. इन्होंने बोला yes. हमेशा innovation जो होता है किस किस एरिया में होता है? Products, processes and services. कौन से? 3 एरियाज में. Products, processes and services में आप innovation कर सकते हो. तो keep your mind all the time alert. When you use a product, oh, can it be improved? When somebody is providing a service, can this service be improved? Or somebody is following a particular process, can this process be improved? इस process में 2 दिन लगते हैं, can it be reduced to 1.5 days or 1 day? This is how you bring efficiency in the system. So हमेशा दिमाग में innovation का दिमाग में रखिए. That is how this India is going to move ahead. आज अगर UPI दुनिया में नाम कमा रहा है, somebody innovative idea. What a great idea. 10 रुपए भी देने होते तो मैं एकदम पेटीएम के थ्रू या UPI के थ्रू दे सकता हूँ आराम से. दिल्ली के अंदर या पूरे नॉर्थ में शादी ब्याह में ना वो ढोल बजाते हैं और लोग नाचते हैं, मालूम है सबको? ढोल बजते हैं. यहाँ भी होता होगा आजकल, यहाँ भी दैट कल्चर हैज कम एवरीवेयर. वहाँ भी उन्होंने वो QR कोड लगा के रखा हुआ है ढोल के ऊपर कि भैया स्कैन कर दो और 100 रुपया लाई करके ऐसे मार दो उसके ऊपर से. हमारे मंदिर में लग गया. मंदिर में भी लग गया. यस, करेक्ट. सब जगह पे शुरू हो चुका है. नाउ द वे इंडिया हैज रियली रेवोल्यूशनाइज्ड दिस कंसेप्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट्स रियली ग्रेट. एंड एज हमारे शाह जी ने बोला था कि वी आर द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री एज वेल एज दिस डिजिटल इकोनॉमी इज कंसर्न्ड. यस, we are number 1 in the world with 41% payments happening in digital. Just imagine. And we are way ahead. China is second, way behind. We are number 1. We are number 1 with number of startups starting per day. We are number 1 in the world. Milk production में तो बताया उन्होंने, we are already number 1. और जब हम छोटे थे, हमारे स्कूल में वो मिल्क पाउडर आया करता था, कभी स्वीडन से, कभी कहीं दूसरे कंट्री से, और गर्म पानी में उसको घोल करके हमको पिलाया जाता था कि दिस मिल्क हैज कम फ्रॉम स्वीडन एंड ऑल दैट. टुडे वी आर एक्सपोर्टिंग मिल्क. अनाज के क्षेत्र में भी इवन एक कंट्री लाइक अफगानिस्तान जहां पे तालिबानों की हुकूमत है, उनको भी हमने पिछले दिनों में चावल भेजे हैं, तालिबान जैसे कंट्री को. श्रीलंका में भुखमरी हुई, उनको भी हमने चावल भेजा है और अनाज भेजा है उनको भी. Anywhere in the world there is a problem, we are there to help them. और कोवैक्सीन तो हमने कितने ही कंट्रीज को दिया जो गरीब कंट्री थे. चल भाई ले जा, तू भी ले जा. ये है हिंदुस्तान आज का, जो छाती तान करके खड़ा होता है. और जब हम आपकी एज के थे या उससे थोड़े बड़े थे, विदेश में कहीं पर भी जाते थे तो मालूम है हमारा स्वागत कैसे होता था? he is from India, he is from India. आज भी शब्द यही बोलते हैं, लेकिन कहने का स्टाइल चेंज हो गया है. नाउ कहते हैं he is from India, ऐसे करके बोलते हैं. इंडिया का नाम लेता ही मतलब उनके कान खड़े हो जाते हैं. जल्दी ही he is from भारत बोलेंगे. So that is the change which has the whole world has seen, the way we have transformed over the last few years. Now gentlemen, चारों speakers में अपने अपने विचार रखे. Now the house will be open for questions from your side also. You can also ask questions. So questions from your side should come on a slip of paper. I am sure some volunteers will come and give me the slip here. So write down whatever question you have. For these 4 speakers with me, you can ask any questions. And meanwhile, I am going to ask a few questions to make it interactive. So first of all, let me ask Subha Lakshmi ji. ये जो यूथ का माइंडसेट है, now the mindset is very very important that should change if they want to really transform this country or this world. I'll put it that way. Yes. So is there some process that can be followed for changing this mindset? See, what I have observed is that the businesses of tomorrow will solely depend on 2 factors. Technology factor and the people factor. Of course, we are in the people domain, and we are witnessing a new era which is seeing rapid burst of technology disrupting business models. Now, while this disruption is happening, the talent that is addressing this business is getting defocused and uncertain.
new customers, the customer needs are changing. If the organizations become fully customer centric and customer obsessed, then they will be the winners in tomorrow's business story. So in this process, what happens is the talent and the mindset which is going to work in such business environments, they will lose focus. So to bring in clarity and focus, the people have to know their business mind. You know, everybody is talking about business mind. What is this business mind? Can anyone tell me? You all are all management students? Then? BA, BSc majority. Mixed, okay. Have you all heard of this term business mind? Yes. Can any one of you stand up and tell me what do you understand by this? Those who have said yes. See, generally an organization, you'll see on an average there are 9 types of leaders handling the 9 departments. So these could be finance, marketing, administration, operations, HR. Now, the mindset of the talent, the business mind, is a mind which has to link to that particular activities handling in that particular department. So if your mindset is inclined towards marketing, and if you are able to lead that department, you become a market leader. You know, if your mindset is inclined towards finance or accounting or any kind of analytical work, then you can become a finance leader, provided you have leadership in you. So these are the 9 kinds of business leaders. Okay, business minds. So along with the business mind, you need to have the leadership quotient. Now, according to our research and observation, we have seen that the entire human race has 17 types of mindsets, out of which 40% are born leaders, 20% have the potential to be leaders because they need some kind of mentoring and coaching, and the balance, they lack leadership. So they are the performers. You need to know which area you fall. Are you a born leader? Are you having the potential? Or are you just a performer? So once you get clarity, you will be able to navigate the different challenges and opportunities that come in the way of the business and corporate world. Thank you very much. Madam jo bola 40%, 40%, 20%. On this, I make a statement. मेरे जो lectures होते हैं, I say 5% people in this world make things happen. 5% people in this world only make things happen. 15% people watch things happening. And 80% don't know what the hell is happening. So never be in that 80%, never. कि पता ही नहीं है क्या दुनिया में हो रहा है. You have to be the top 5%. You are from KC College. KC College को छोटी मोटी चीज नहीं है. Do you agree with that? ये जो आपकी यूनिवर्सिटी है, इसका बहुत बड़ा नाम है. और मैं जब आईटी में पहुंचा था, आईटी खड़गपुर में, तो बॉम्बे का भी एक बहुत बड़ा क्राउड आता था वहां पर. तो यहाँ पर 3 कॉलेजेस के लड़के ज्यादा से ज्यादा होते थे. केसी कॉलेज, जैन कॉलेज और सेंट जेवियर्स. ये 3 कॉलेजेस के maximum, and you have a reputation, and you can improve that reputation further. So you have to be in the top 5% people who make things happen. जिस क्षेत्र में भी जाओ, जहां पर भी जाओ, take charge. That's what is required. Okay, now let me go to the next panelist, Pradeep Behra ji. I believe you are working a lot in the field of healthcare also. Now, can you tell me what are the major innovations which you feel which are going to happen during the next decade or maybe more than that in the healthcare field here in India or all over the world? This may sound a bit more technical, but there are 3-4 fields which are very integral now for the next decade, and so probably the drug device combination is going to rule a lot. आप इसको ज़्यादा बहुत टेक्निकली नहीं आ जाएँ तो मैं अगर सिंपली बताऊँ, पेडियाट्रिक पेशेंट्स मतलब बच्चों के लिए अगर इंजेक्शन देना है तो पेन होता है. You can develop a patch, anesthetic patch, जिससे पेनलेस इंजेक्शंस दिया जा सकता है. दिस कैन ऑल्सो कम इनटू ए कैटेगरी ऑफ ड्रग डिवाइस कम्प्लेशन. बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं. सेकेंड है आयुर्वेदा इन ए वेरी साइंटिफिक अप्रोच.
completely. Because जो एक्सेप्टेंस है आयुर्वेदा का वो इसलिए नहीं है कि वो थोड़े रॉ है. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वर्क नहीं करता है, हम बहुत काम करते हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स आयुर्वेदा में, बट मोर और लेस इन अ साइंटिफिक अप्रोच अच्छा रहेगा. थर्ड इज़ पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, जो कि टॉपिक बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. थैंक यू. ग्रेट. और थैंक यू वेरी मच. हेल्थ केयर के फील्ड में चूंकि आप इनोवेशन से इन्वॉल्व हो, आई एम गिविंग यू वन आइडिया and throwing that idea to this audience also who can come up with that device. ये जो आपका मोबाइल फ़ोन है, इसके अंदर माइक है और एक स्पीकर भी है. तो माइक क्या करता है, वो आवाज़ को सेंस करता है, और डॉक्टरों के पास एक स्टेथोस्कोप होता है. स्टेथोस्कोप को क्या करते हैं, उसका वो एक पॉइंट लगाते हैं, इधर लगाते हैं. उसका दूसरा पॉइंट जो कानों में जाता है वो इसके माइक में लगा दिया जाए मोबाइल के, और रिमोट में बैठा हुआ बंदा आपके हार्ट बीट को देख लेगा और आपके पूरा का पूरा चेस्ट को देख लेगा रिमोट वाला, और वहाँ से एडवाइस दे देगा. टेलीमेडिसिन ये अभी तक किसी ने बनाया नहीं है. आई बीन टेलिंग पीपल बट नोबडी हैज मेड इट येट. आईपी करवा लीजिए. हाँ, करवा दीजिए. यस, ठीक है. सो ये आइडिया आप लोगों में से भी कोई बना सकता है, नहीं तो आप बना सकते हो. ग्रेट. ओके, लेट मी गो अराउंड नाउ. आशुतोष जी, आपने थोड़ी देर पहले यूनिकॉर्न्स की बात की थी. नाउ टेल मी, a large number of million entrepreneurs or a handful of unicorns, what will you prefer between the two? ऑब्वियसली देखिए, अगर मैं एक सवाल पूछता हूँ आप सबसे, आप लोगों में से कितने लोगों ने अरविंद आई केयर का नाम सुना है? अरविंद आई केयर. अरविंद आई केयर. अच्छा, ओके. आई केयर. या आई केयर. आई केयर. या. और कितने लोगों ने जोमेटो का नाम सुना है? राइट. तो ये देश की विडंबना है, राइट, कि जोमेटो, स्विगी, जेप्टो जो 10 मिनट में आपको घर पे डिलीवरी कर दे रहे हैं, जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है. टू बी ऑनेस्ट, आई फील दैट इट्स अ वेस्टेड प्रॉब्लम दैट एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू सॉल्व. उसको बच्चा बच्चा जानता है, मतलब एटलीस्ट यहाँ पे जो बैठे हैं वो सब कोई जानते हैं. बट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक अरविंद आई केयर जो वर्ल्ड के, फॉरगेट इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड्स मोस्ट एफिशिएंट आई केयर है, उसको हार्डली कोई जानता है. एंड दे आर ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ नीडलेस ब्लाइंडनेस, इन द वर्ड्स ऑफ द फाउंडर, एट अ मच लार्जर स्केल देन एनीबडी इन द होल वर्ल्ड, राइट. तो दैट्स वाई आई फील द होल स्टोरी ऑफ यूनिकॉर्न, विच इज़ जस्ट फ्यूल्ड बाय दिस मीडिया, इट साउंड सो ग्लैमरस कि हम रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना भूलते जा रहे हैं, और जो अननेसेसरी प्रॉब्लम है जिसको हम खुद ही बना रहे हैं और खुद ही उसको सॉल्व करने के पीछे लगे पड़े हैं, एंड देन वी ट्राई टू गेन द ग्लोरी. दैट्स व्हाई आई फील वी डोंट नीड यूनिकॉर्न्स. वी नीड रियल एंटरप्राइजेस which can solve the real problems of India, which don't lie in places only like Mumbai, Bangalore, Delhi. They are in places like Coimbatore, in Lucknow, in Devariya, in those kind of places जहाँ पे real problem है. अगर आप 10 मिनट में मेडिसिन डिलीवरी करा दीजिए तो आप देखिए कितने बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे रहे हैं, और साथ ही साथ कितना बड़ा मार्केट भी कैप्चर कर ले रहे हैं, राइट. बिकॉज बिजनेस नीड बोथ. इट ऑल्सो नीड्स टू हैव प्रॉफिट, नो डाउट, तभी आप एक्सपैंड कर पाएंगे, आप सर्वाइव कर पाएंगे. बट इट शुड ऑल्सो हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ solving the real problems. That's why I feel the saga or the whole story of Unicorn is Western fueled thing. We should not just blind copy it. We should look in our own problems, in our own strength, और उसको यूज़ करके सॉल्व करें. तब मिलियन एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे बन सकते हैं. बिकॉज इंडिया ऐसी कंट्री भी है, इतनी डाइवर्स है कि एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन हर जगह आंख बंद करके हम नहीं चिपका सकते. वी हैव टू कंटेक्सचुअलाइज, वी हैव टू अंडरस्टैंड द लोकल कल्चर, कॉन्टेक्स्ट, उसके हिसाब से हम चीज़ों को करने की कोशिश करें. नहीं तो हमारी विविधता चली जाएगी. हम एक ही चीज़ सब जगह चिपका देंगे, और एक जैसे आज यूएस बन गया है या और देश बन गए हैं, एक ही सब लोग दिखते हैं, एक ही जैसी चीज़ें करते हैं. नो, वी हैव अ पावर इन आवर ओन डाइवर्सिटी, उसको मेंटेन करना है. दैट्स वाई आई स्ट्रांगली फील. प्लस एज यू ऑल्सो सी कि द बिग कंपनीज, द बिग यूनिकॉर्न्स, दे कांट सॉल्व द रियल प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड इन दीज पार्ट्स. वो तभी हो सकता है जब हम छोटे छोटे एंटरप्राइजेज, MSMEs क्रिएट करेंगे, विच आर बेस्ड इन दोज एरियाज लोकली, जियोग्राफिकली, and they are trying to solve the problem. So I am a big believer in the power of million enterprises than a handful of unicorns.
वेरी गुड आशुतोष जी, बहुत बढ़िया कहा इन्होंने। हर गली मोहल्ले में, हर गांव में छोटा छोटा एंटरप्रेन्योर पैदा होना चाहिए हर जगह पर। तो बहुत बड़े बड़े यूनिकॉर्न की आवश्यकता नहीं है। लाइक एग्रो इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल कैन बी वेरी बिग थिंग इन इंडिया। आज भी 60% हमारा जो लोग हैं वो गांवों में रह रहे हैं, आज भी 60%। तो अगर एग्रो इंडस्ट्री डेवलप होती है तो दे डोंट हैव टू रन टू द सिटीज। तो जो शहर में आकर के रामू बन जाता है वो गांव में रामलाल जी कहलाता था। गांव में ए रामू इधर आ, उसको ऐसे बुलाया जाता है। बट ही वॉज ए रिस्पेक्टेड रामलाल जी इन द विलेज। तो इफ ही स्टार्ट्स एक छोटा मोटा इंडस्ट्री इन हिज विलेज इटसेल्फ and is able to sustain himself and his family, that's definitely much better option, I will say. I would like to add Please, to madam. Ashutosh what he said. I completely agree that we have to encourage entrepreneurs, because I have been on the jury panel of many startup ideas. I have seen they have come out with excellent ideas and they are highly creative people. So you see, ideas from where do they come? Only when you are creative and innovative. But they are not able to present it properly, you know. So what I suggest is those who are highly creative and are introverts, shy to present, they should partner or collaborate with a person who has leadership in him, who is able to convince the customer, who is able to promote his products and services. That combination is a very good combination for a business mind. And also too many ideas fail because they lack a business mind behind it. Great. I have one question from the audience, but before I go to that, I'll request Aditya ji. हिंदुस्तान में आजकल टीवी जब देखो पिछले 1-2 दिन से, तो बहुत बड़ी बातचीत चल रही है वो जनगणना के बारे में, बेस्ड ऑन कास्ट एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ऑल दोस टाइप ऑफ थिंग्स। नाउ अगर हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना है तो क्या ये जात पात के बेस के ऊपर जो लोग, कुछ लोग वोटिंग वगैरह करते हैं, तो क्या हिंदुस्तान वास्तव में विश्व गुरु बन पाएगा? कि अगर आज भी इतने 2023 के अंदर भी हम जात पात के बंधनों के साथ जकड़े रहेंगे, कांट वी थिंक दैट वी आर ऑल इंडियंस, सब भारतवासी हैं। तो ये वोटिंग पैटर्न शैटर्न ये 2047 तक कैसा चलने वाला है, इसके बारे में आपने विचार थोड़े बताइए कि व्हाट शुड वी बी डूइंग इट। जेटली जी, इसका उत्तर देने के लिए मैं आज से 25 साल आगे की भी मैं आपको एक मानचित्र बताऊंगा। जब हम उसके बारे में बात करेंगे तो ही हमें समझ में आएगा। मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा है आप लोगों को? ओके। तो पहला चीज़ है कि इन्होंने जो जनगणना की है, ये जनगणना नहीं है, ये सिर्फ एक सर्वे है। पॉइंट नंबर 1, सर्वे जनगणना नहीं बनता, उसका कोई लीगल बेसिस नहीं है, ये कोर्ट पे जाएगा और इसको स्ट्राइक डाउन किया जाएगा। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, अगर जनगणना भी कर लेते हैं, इन्होंने लोगों का जो जनमानस है ये उन्होंने समझा नहीं है। क्योंकि आज का जो युवा, और मैं कल की ही एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं भोपाल गया था और मैं टैक्सी ड्राइवर से रेगुलरली बात करता हूँ क्योंकि उनके पास बहुत ज्ञान मिलता है। तो टैक्सी ड्राइवर मेरे से कहता है, युवा है, वो कहता है कि मध्य प्रदेश में चाहे कोई भी मुख्यमंत्री बने, बीजेपी आएगी, ये उसका कहना था। And so he says it doesn't matter as long as you have a strong, in effect, you have a strong effective governance model. तो ये लोग, इनको जो सोच है ये आज से 10, 15, 20 साल पहली वाली सोच है, इन्होंने जाना नहीं है। चाहे वो कुछ भी करे, आज का युवा इसने ये झेल लिया है कि प्रगति के ऊपर वोटिंग होगा और ना कि जात पात के ऊपर। तो एक तो हम मान लें कि ऐसा नहीं होगा। आगे जाके क्या होगा? आज से 25 साल आप लोग पॉलिटिक्स में, राजनीति में आप लोग भाग लोगे। राजनीति जो है वाइड स्प्रेड होगा। एमपीज और एमएलएज का जो आज का पोजीशन है वो डी ग्लैमरस किया जाएगा, जैसे सिंगापुर में होता है। जी, सिंगापुर में आप कोई भी एमपी एमएलए को मतलब आप रास्ते पे देख सकते हो, चल रहा है, और उसी का काम आज हो रहा है। आप लोगों को शायद दिखता नहीं है। मोदी जी का ऐसा प्लान है कि ये जो
कृषि भवन, उद्योग भवन, वो भवन, ये भवन सबको हटा के एक स्काईस्क्रेपर में डाल दिया और सब ऑफिसेज वहाँ पे आ गए। वो दिन भी ऐसे आएंगे जब सबके बंगले निकल जाएंगे, सबको एक बिल्डिंग में डाला जाएगा और कहा जाएगा कि भाई आप सब ये बिल्डिंग में एक एक कमरे में, एक एक फ्लैट में रह जाना। ये सब मतलब आने ही वाला है मतलब। और दूसरा चीज़ ये होगा कि आज का युवा जो कल मतदान करने जाएगा या मतदान आज भी कर रहा है, वो सोचेगा कि 3 P's के बारे में सोचेगा, परफॉर्मेंस, पैशन एंड प्रिसिशन। तो ये सोचेगा कि हमारे जो सांसद है या हमारे जो विधायक है उसने हमारे लिए क्या किया है, व्हाट आर दे डूइंग फॉर अस, आर दे डूइंग व्हाट दे आर सेइंग। सबका स्कोर कार्ड निकलता है, आज भी है, पोर्टल पे अवेलेबल है, आप लोग जाके देख सकते हो कि कौन से एमपी ने कैसा प्रश्न पूछे हैं संसद में या फिर विधान भवन में, उनका उत्तर कैसा हुआ, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वगैरह है। और जैसे ही हम रोटी कपड़ा मकान से उभर कर आएंगे तो आप लोग ये जानोगे कि यू विल टेक पार्ट मोर इन सिविक लाइफ। तो मैं एक सभा में संबोधित कर रहा था और किसी ने कहा अभी तो हम अच्छा कर रहे हैं मगर क्या गारंटी है कि कल जाके सही होगा। तो मैंने कहा कि जब तक, और मेरे बात बहुत गौर से सुनिएगा, जब तक आप वोटिंग बूथ में जाते हो अपने होश और आवाज़ और प्रगति के तरफ वोट करते हो, कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं सकता। तो जनता जनार्दन आपके हाथ में है। अपने हाथ को मल के ये मत कहना कि हमारे ऊपर शासन करने वाले सही है नहीं सही है, वो तो सिर्फ आपके रिफ्लेक्शन है। तो अगर आप सिविक लाइफ में भाग लोगे, राजनीति में भाग लोगे, अपने सांसद या विधायक से प्रश्न पूछोगे, या जब आज भी जब नए एक्ट्स आते हैं उनका कंसल्टेशन पेपर डाला जाता है, हम में से कितने लोग उस पर टिप्पणी देते हैं, कमेंट करते हैं, आपको करना है। अगर ये सब हुआ तो जात पात कोई मायना नहीं रखेगा। थैंक यू वेरी मच। अब ज़रा मैं जानना चाहूँगा कि आप में से जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं यहाँ पर, कितने स्टूडेंट इस समय अगले लेटेस्ट से 1 साल के अंदर अंदर 18 साल या उसके ऊपर हो जाएंगे? ज़रा हाथ खड़ा करिए। 18 years and above। ओके, ऑल यू 18 years and above हाथ खड़ा कीजिए, पीछे ऊपर भी। ओके, ऑलमोस्ट एवरीबॉडी, आई सी दैट। दैट मीन्स यू हैव द राइट टू वोट, यू हैव द राइट टू इलेक्ट द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, you have the right to select your MLA, MP and everybody। इतनी पावर है आपके हाथों में। Now I'm going to ask you a second question। आप में से कितने लोगों का आज की तारीख में वोटर कार्ड नहीं बना हुआ, वो जरा हाथ खड़े करें। ओ माय गॉड, 50% के वोटर कार्ड नहीं बने हुए। तो मैं जो कॉलेज के प्रिंसिपल वगैरह हैं उनके रिक्वेस्ट करता हूं टीचरों से कि थोड़ा इनको एनेबल करें। प्लीज मेक योर वोटर्स कार्ड। 50% जितने भी हैं, जिन बच्चों ने हाथ खड़ा किया, मेक योर वोटर कार्ड्स। यू हैव द पावर इन योर हैंड, डोंट लेट इट गो। ओके जेटली जी, 2 चीज़ मैं बोलना चाहूँगा। जल्दी से जल्दी अपना वोटर कार्ड बनाए, उसके बाद मत कहना कि राजनीति सही नहीं है और गवर्नेंस सही नहीं है। आपने अपने काम नहीं किया है, और जिस दिन मतदान होगा उस दिन मैं गुजारिश करूंगा, लोनावाला, कंडाला जो भी हो मत जाइए। वो आपके लिए हॉलीडे नहीं है, वो आपका भविष्य के सुनहरे दिन है। उस भविष्य के लिए एक बिरयानी या जो भी वो जो फ्रीबी देते हैं, जो रेवड़ी देते हैं, उसके लिए आपके भविष्य को खराब मत करिएगा। आज आप ये लेके चलो, जब तक आप वोट नहीं दोगे तब तक कुछ नहीं होगा। आपका मतदान सभी समस्याओं का समाधान। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और मैं इससे एक स्टेप और आगे जाऊंगा कि नॉट ओनली योर वोट, आपके 5 पड़ोसी इधर, 5 पड़ोसी इधर, 5 पड़ोसी इधर और 5 पड़ोसी इधर, उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि इनके सब लोग वोट करने जाएंगे, सभी लोग। एंड दैट इज देन द यूथ, देन यू आर टेकिंग चार्ज, देन यू आर अमंग दोस 5% पीपल हु मेक थिंग्स हैपन। You want to be in that 5%?
Do you want to be in that 5%? अरे जोर से बोलो यार. Yes, you should be in that 5%. Okay, now madam, here is one question for you. Dr. A.P. Jayarama ji ने पूछा है, जयरामन जी ने, can you share the reference for the leadership traits and classification you made? Some reference he wants to know. Who has written this question? Okay. Sir, I have developed my own tool, Core Mindset Mapping, which is an output of over 10 years of research in human behavior sciences. And prior to Mind Elements, we were handling talent sourcing, where I would never send a talent for an interview without doing this test. I never sent a candidate without knowing the mindset. And when I started knowing the mindset of the person, whether he's a leader or a non-leader, whatever it has to be linked to the JD, I found the closing ratio was 9 out of 10, and they stayed for longer period of time in the organization. So now, regarding the leadership, there are, as mentioned in the, I can't, it is a copyright tool, but since it's a question and I feel you all should know, the 40% leaders who are there, they are, leadership is a word which has many characteristics, So like, first and foremost, he needs to be self-reliant, Atmanirbhar. Second important thing is he has to be self-sacrificing. Like Commander Jaitley, the army veterans and all, they have given their whole time and life for the nation. So in an organizational setup, the leader has to put his team forward and give credit to his team and keep himself backward, behind. So there are a set of behavioral attributes to leaders which is there in our test, which make me define them as a leader. Thank you. Thank you. Yeah. Madam, thanks a lot कि आपने जब लीडर्स का नाम लिया तो उसमें फौजियों का भी नाम लिया कि कमांडर जेटली. सुबह आपने जो सुना लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी जी का जबरदस्त भाषण, मजा आ गया उसको सुन करके. एंड आई एम श्योर यू विल ऑल रियलाइज, हिंदुस्तान में जब भी कहीं पर कोई आपदा आती है, कोई कैलामिटी आती है, एंड इफ द लोकल गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू हैंडल, किसको बुलाया जाता है? किसको बुलाया जाता है? इंडियन आर्मी. और जब इंडियन आर्मी पहुंचती है, वो कुछ भी काम कर सकती है. आपके यहां पर लोकल का एक पुल भी टूट जाता है तो उसको भी 24 घंटे के अंदर बनाने के लिए कौन आता है? इंडियन आर्मी. श्रीनगर के अंदर फ्लड आ जाए या तो सुनामी आ जाए, कौन पहुंचता है वहां पर? भारतीय सेना. चाहे एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, वी आर देयर टू सर्व दिस कंट्री. वी आर एबल टू फाइट द वॉर आल्सो ऑन द बॉर्डर, एंड वी आर सर्विंग साइड द नेशन आल्सो. And while doing all this, they have never been political. That is the biggest important. Yes. हमने कई देशों में देखा है, जब आर्मी इतना काम करने लगती है, सेना इतना काम करने लगता है, पॉलिटिकल भी हो जाता है. मगर सिर्फ हमारे इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है जिन्होंने इतना काम किया मगर कभी पॉलिटिकल नहीं हुए. वेरी करेक्ट. एक बार और जोर से ताली बजाई जाती है फोर्सेस के लिए. ओके, नाउ जब 2047 की बात करते हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चन आया था कि 2047 में हिंदुस्तान कैसा होना चाहिए. क्या उस टाइम भी हमारे यहाँ पर स्लम्स होनी चाहिए? मैं कहूँगा अभी एक भी स्लम नहीं होनी चाहिए. हर हिंदुस्तानी के पास अपना अपना घर होना चाहिए रहने के लिए, और वो भी बढ़िया, साफ सुथरा, स्वच्छ, सुंदर, चारों तरफ ग्रीनरी के साथ. और हमारे अंदर एक ऐसा कल्चर आना चाहिए. आजकल हम लोग कचरे वाला किसको बोलते हैं? जो सफाई कर्मचारी होता है उसको बोलते हैं, लेकिन मैंने उसकी डेफिनेशन चेंज कर दी है. मैं कहता हूं कचरे वाला वो है जो कचरा फेंकता है सड़क के ऊपर, वो कचरे वाला है. वो जो सफाई करता है वो तो बेचारा सफाई कर्मचारी है, वो अभिनंदन सम्मानजनक है, उसकी इज्जत होनी चाहिए जो हमारी गलियां साफ करता है. कचरे वाले तो हम हैं जो कचरा फेंकते हैं. और आज से ये प्रण कीजिए कि आई शैल नॉट बी ए कचरा वाला और कचरे वाली. मैं कचरा नहीं फेंकूंगा या फेंकूंगी.
अगर केला खाया है तो केले का छिलका हाथ में पकड़ के रखूंगा या रखूंगी जब तक कोई डस्टबिन ना मिल जाए मुझे। तो इस देश को साफ रखने के लिए भी हम सबको एक कल्चरल चेंज की आवश्यकता है। एंड यू कैन स्प्रेड दैट कल्चर। अपने कॉलेज को, अपने मोहल्ले को, अपनी बस्ती को एकदम साफ रखेंगे। ट्रेन में जा रहे हैं तो वहां पर भी कचरा नहीं फेंकेंगे। तो आज से ये प्रण लेते हैं सभी लोग प्रण लेते हैं। हिंदुस्तान को साफ रखेंगे, मुंबई को साफ रखेंगे, अपने मोहल्ले को साफ रखेंगे, कॉलेज को साफ रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये इतना सरल है कमांडर जी, मैं 1 मिनट लेना चाहूँगा। मैंने जरा शांत से सुने। मैंने खुद ब खुद, मतलब इसके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, मैंने खुद ब खुद एक अभियान चलाया था, थूकू नका। सबसे सरल, थूकू नका। लोग इतने आते जाते सड़क पे, और अगर किसी ने थूक भी लिया तो बहुत विनम्रता से हम उनको कह सकते हैं कि भाई थूको मत, क्योंकि थूकोगे तो बीमारी फैलेगी। और मैंने ये देखा कि 99% लोग झगड़ा नहीं करते हैं, मान लेते हैं। सिर्फ अच्छी तरह से उनको कहना, बस यही कहोगे तो सब कुछ साफ सुथरा होगा। वैसे भी जब से ये अभियान चला है केंद्रीय सरकार की तरफ से, काफ़ी साफ सुथरा हो गया है बार। ओके, अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछने वाला हूं प्रदीप जी से। सस्टेनेबिलिटी इज ए वेरी बिग चैलेंज इन द वर्ल्ड। वो कहते हैं कि पूरी दुनिया में वी हैव ऑल द रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड फॉर द नीड ऑफ ऑल द ह्यूमन बीइंग्स एंड ऑल द अदर एनिमल्स आल्सो, बट अर्थ डजंट हैव द रिसोर्सेज फॉर द ग्रीड ऑफ इवन वन मैन। ग्रीड की कोई लिमिट नहीं है। तो जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनके साथ ही हमको सबका जीवन यापन करना है। तो प्रदीप जी इसके बारे में कुछ अपने विचार देंगे। इसके पहले कि मैं कैप्टन शर्मा जी को बुलाऊं अपना वक्तव्य देने के लिए। हाउ टू गेट मोटिवेटेड, ये मैं समझ रहा हूँ कि क्वेश्चन ऐसा है कि आप ये कैओस में मोटिवेटेड कैसे रहें सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ। आज का यूथ है, मैं पर्सनली उसको कंपेयर करता हूँ हाइव्स के ऊपर। बी हाइव्स देखा है, मधुमक्खी का छज्जा। सो कितने कैओस है, दिस इज़ व्हाट द यूथ रिप्रेजेंट्स। बट ध्यान से सुनिएगा, केओस अगर रिपीटेटिव हो, एक कंस्टेंटली एक लिमिटेड स्पेस में हो, तो वो एडवांटेज के हिसाब से काम करेगा। आइडेंटिफाई ए लीडर अमंग योरसेल्फ, मिशन विजन सेट कर लीजिए, देन माइलस्टोन अप्रोच रखिए। लास्टली प्रोबेबली कोर्स करेक्शन के लिए हमेशा ओपन रहना। सो नथिंग इज गारंटेड, इवन योर प्लान्स, विजन्स, मिशंस। सो ऑलवेज बी रेडी फॉर कोर्स करेक्शंस। थैंक यू। Okay, thank you very much, Pradeep ji. So nice. Do we have Captain Sharma ji? You will invite him later? Okay, fine. So, we come to the conclusion of this first panel of the day. Let me convey my thanks, starting from Dr. Subbalakshmi ji. जोर से ताली बजाई जाए उनके लिए। Dr. Shashidharan ji, Nathan ji, Pradeep ji, Ashutosh ji, all of them, they express their ideas in a beautiful, crystal clear way. I am really thankful to them, and they answered all the questions from the audience. I was expecting definitely a few more questions, but आजकल के बच्चों में क्वेश्चन पूछने की आदत थोड़ी कम हो गई है। हम लोग अपने टीचरों को काफ़ी तंग किया करते थे। आप लोगों के लगता है टीचर काफ़ी कूल रहते हैं, आराम से। You don't trouble them much. So my request to all of you is, please trouble your teachers, ask them questions, plenty of questions, क्योंकि this is the right time to ask the questions. यहाँ से पास आउट होने के बाद क्वेश्चन पूछने का मौका नहीं मिलेगा। इंडस्ट्री में जाओगे, कारपोरेट में जाओगे, जो भी जॉब करोगे, this is the right time to look stupid also, to ask a stupid question also, and no question is a stupid question, let me tell you. So थोड़ी बहुत आदत डालिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की। इसके साथ ही मैं अपने सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत हाथ जोड़ करके धन्यवाद देता हूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कमांडर साहब के लिए प्लीज तालियां। ए बिग राउंड ऑफ अप्रोच फॉर जेटली सर। थैंक यू। Thank you so much to our panelists as well as our moderator of the first session. I invite up on stage Dr. Shalini Sinha, Vice Principal of KC College, to please felicitate our panelists and our moderator for panel 1.
Mr. Aditya Seshadrinathan. Our moderator for the session, वोटर्स ये करते हैं और हम तुरंत रजिस्ट्रेशन कराते हैं बिल्कुल 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 हम करते हैं। our moderator for the session, Commander V.K. Jaitley. Mr. Pradeep Behera. And Mr. Ashutosh Kumar. जय जय महाराष्ट्र माझा खाली मैं माइक लगाऊंगा गाते रहना किसानगढ़ पे We now move on to our keynote address on changing infrastructure landscape to be delivered by none other than Captain B.V.J.K. Sharma, CEO of Adani Airports. Let me formally introduce Captain Sharma to you all. Captain, you may come up to the stage, please. Captain Sharma is known and adored as the doyen of the maritime industry and greenfield infrastructure projects across India. He started his illustrious career in the Merchant Navy and commanded ships of various complexities. Eventually, he decided to settle onshore to play an extensive role in the advancement of the Indian maritime sector, including the development of rail infrastructure, inland waterways, and port connectivity across India. His expertise has been vital in the progress of companies like SR Steel, Mundra Port, JSW Infrastructure Limited, National Rayon Corporation, and presently the Navi Mumbai International Airport. During his tenure with the JSW Infrastructure, a 25,000 crore company as joint managing director, he had a sustainable approach which was clearly visible when he successfully shifted the transportation model from road to rail, then rail to water, thereby reducing the carbon footprint. His passion and vision for infrastructure projects has led him to spearhead an investment of rupees 20,000 crore to develop the Greenfield Airport in Navi Mumbai. His farsightedness has given him the insight to negotiate with lead bankers to achieve financial closure and with contractors to achieve phase milestones such that phase 1 and 2 of the airport can be delivered to the nation as per the commercial operation date. While Captain Sharma is actively working on creating an efficient and sustainable infrastructure, he continues his passion of giving back to the community by serving on several high-level industry and civic society bodies. He has been recognized for his contribution to the industry. Among the awards include the Udyog Ratan Award, constituted by the Institute of Economic Studies, the International Friendship Society Award at Bangkok, the Maritime Personality of the Year Award at the Maritime and Logistic Awards, and the Shipping and Logistics Professional by Bhandarkar Publications in their Samudra Manthan Awards function ceremony. He is now making his mark in the aviation sector as a CEO for the most prestigious Navi Mumbai International Greenfield Airport. We invite you, sir, to deliver your keynote address on changing infrastructure landscape. Good afternoon, gentlemen. I'm personally very charged up after listening the moderation by Commander Jaitley and the earlier speakers. And I still envy you that you get such opportunities organized by KC College and the HNCC University Mumbai, and the topic that has been chosen today. In our younger time, probably such opportunities were lesser. But the topic that has been chosen is very apt, and we are heading towards that Amrit Kal, and
lot of discussion points have come up about the leadership, trade, the excellence, your mindset, the resources, your entrepreneur versus unicorn, and Dr. also talked about an idea. So while coming here, I was planning to say something different, but after listening to all the speakers here, I have just pulled out some very powerful statements by various people. When it comes to idea, an idea that is developed and put into action is more important than an idea that exists only as an idea. Said by Gautam Buddha. Another statement by our Swami Vivekananda, we are responsible for what we are. And whatever we wish ourselves to be, we have the power to make ourselves. If what we are now has been the result of our past action, it certainly follows that whatever we wish to be in future can be produced by our present actions. Gentlemen, I'm sharing all this because a lot of speakers have covered, and these are very powerful statements, and putting simply like this, you would understand why this is coming. Another statement is everything can be explained to the people on the single condition that you want them to understand. There are many such statements, small, but very important in our life. And personally, I have come from a very ordinary background and born in 61. And I was a very small, tiny boy in the school, but academically probably I was good. So used to get bullied, and the principal one day made me the monitor. And that changed my life. Apart from being school first, being monitor, you get that golden chance. And I took up this. I used to teach 9th student when I was in class 10th and fend myself. Probably, as one of the speakers said, I would have been a scientist joining Indian Institute of Science, or probably a nuclear scientist myself. But turned out that I joined Merchant Navy. Again, Merchant Navy, that throws a lot of opportunity for you to go around the world and discover yourself. And very soon after getting command, I decided, no, whatever I had to learn, I have already learned. Came ashore and started building this infrastructure story around. So opportunities pass by, they don't fall in your lap. You have to grab them, okay? And your mindset, your risk appetite should be good enough for you to rise. And started like maritime underwriting to maritime world that I have built a lot of seaports, India, abroad, been into construction of roads, railways, mining business abroad. But what I have learned is the opportunities that are available in India, as Commander Jaitley was saying, are immense. And this infrastructure story in India is ramping up, and especially the Indian infrastructure advance is directly connected to the aspirations of our 1.4 billion people. 2047 dream of becoming world's third largest economy and target of becoming 5 trillion economy by 2030 are all riding on the promise of an impeccable infrastructure to support it. There are definitely 4 vectors that we identify
which would drive this supply story, because we are lucky that in India, businesses have this lucky field that demand is always ahead of supply. Okay? But how is this demand going to come up and coming up is this our demographic dividend. The youth that are all present here and our in the country middle class is growing. There is a global drive for sustainability and there is a lot of drive for digitization around. These four vectors would definitely propel us to that dream of 2047 we are talking about. If we grow at 8% of GDP and our savings come to about 32% or above, we will reach that 25 trillion probably number. Our Prime Minister also, he chaired a meeting in Niti Aayog and identified the skill development, women empowerment, infrastructure development in the his governing council meeting clearly. And there also again infrastructure ranks very high in terms of his priorities. Also an exercise to envision India 2047 is undertaken by Government of India under the rubric of Azadi Ka Amrit Mahotsav to meet aspirations of attaining new heights of prosperity of the country, making best facilities available both in the villages and the cities, eliminating unnecessary interference by the government in the lives of citizens, building world's most modern infrastructure. And our Ministry of Statistics and Program Implementation very closely follows these 11 key infrastructure sectors, be it telecom, civil, aviation and roads, petroleum, natural gas, fertilizers, shipping, ports, power, railways, steel, coal. All of them have their different ministries, but Statistics Department keeps a very close tab on them. And government is on now constant vigil with the threat of external threats coming to keep our infrastructure safe and secure. And to bring speed to the entire effort of the government, Prime Minister has formed this Gati Shakti program. If any of you have heard that Gati Shakti program? Okay. In this, all the logistics and connectivity infrastructure projects which are entailing investment of more than 500 crore are routed through the Network Planning Group and called NPG. It's constituted under the PM's Gati Shakti program. There are about 21 ministries and departments, including health and Panchayati Raj, covering these agri clusters, fishing clusters, IT Electronic Park, Defense Corridor, Pharma clusters, Bharatmala, Sagarmala, Udan, if you have heard of by the Ministry of Civil Aviation, or industrial corridors, various industrial corridors coming up, SEZ, the textile cluster, petroleum, food and PDS. They have all been integrated under this PM Gati Shakti National Master Plan, which was launched in 2021. And almost 102 critical projects have been identified to be completed by 2024. And the progress, I would say, is on the mission mode. And the kind of layers that are there in the information network is making everyone come together to enhance government's reach to the socio-economic development that is needed. And is also improving multimodal connectivity, identifying availability of land and location of projects across Indian business and making India business competitive.
It used to be a lot of challenge in the past for the PPP projects under infrastructure, the information across ministries were not in one place. That has been now addressed. Land availability used to be the challenge. The environment clearances were challenged. The quality of DPR was questionable. And based on that, a lot of dispute, and there was no dispute resolution process. Government has addressed all this now. And they're also leveraging the technology, and they have a lot of planning tools and for financing, and they're also bringing the logistics synergy of moving people, goods, and information. There's a lot of drive to go to reduce the logistic cost. If you all are aware, the logistic costs itself in India is about 13 to 14% of our GDP, and we are losing almost $45 billion every year. And this Gati Shakti is mainly coined to bring that speed. Of course, we need speed, we need scale, we need sustainability. But how do you reduce the logistic cost? You have to bring up speed and reach economy of scale. For that, a very deliberate modal shift is happening from road to rail, rail to water, and almost I will say about 61% of our movements are still on roads, and about 30% by rail, and about 6% only by coastal at the moment, and about pipeline would be about 4%. Even though we have a coastline of almost 7,500 kilometers and inland waterways of about 14,500 kilometers. Wherein cost per ton kilometer, if you use the water mode, maybe 30 paisa per ton per kilometer, wherein rail could be 1 rupee 50 paisa, and road is almost 2 rupee 30 paisa, but now it has gone up because of the diesel. So, since I have given you those numbers, the target of 14%, right now, an initial target of 12% is taken, but ultimately, we have to benchmark ourselves at the other nations of 8 to 9%, and also bring this modal shift, wherein the coastal and inland water in India, which is about 6%, wherein when you compare with China, it is 24%. Our neighbor Bangladesh itself is 32%. So you guys have to choose that water mode more and more. And we also have to put up that infrastructure in place for people to believe in. But a lot of people have started taking the ferry across to Alibag. Anybody have taken that ferry there? Okay, so that should be the mode going forward, but the cost is still high. The cost has to come down. Okay. And this also, Gati Shakti has helped us in benchmarking and help raise productivity, and it's going to accelerate our growth and development, and overall, it's going to optimize the cost. And this whole thing is based on about 6 pillars. And they're making it very comprehensive, and all existing and planned incentives, ministry and departments are coming on one centralized portal. And they're sharing and providing data across the ministries now, and also to the users. And they're also prioritizing to help different departments to put up their project through cross-sectoral interaction. There are also optimization where transportation of goods from one place to another is happening. For example, with this information of cement availability, Gadkari ji, who is you all know about, he transformed a lot of things in PPP by bringing a hybrid model where EPC guys were losing money, but now he has brought in a very constructive hybrid model. More than 2 lakh cases he has resolved.
And he has all asked the cement industries to pool in, wherein in a cement cost of a bag, 50% is logistic cost and 50% is about production cost. So what he has done is he has identified the factories and also connected them with the nearest highway contractors who are engaged, and he has worked on reducing the cost per bag. And through a tender route, he has discovered the best price where he could bring down the road construction cost. He uses a lot of technology. It's a commendable job is going on in the road ministry at the moment. And this Gati Shakti is also provided technology. There is a tool called BISAG N, Bhaskaracharya National Institute for Space Application and Geoinformatics. It's doing a tremendous job in helping us gather the information in one platform. And also the GIS mapping tool that they are using, you know GIS, if anyone has used here, has got more than 200 layers of information. We have, I think, another 10 minutes, so probably we'll speed up. But as I said, we need about 8% growth to achieve our target of 2047. We are also making a highway that almost about 13,800 kilometers of highway construction is envisaged in this year itself with an outlay of 2.81 lakh crore. And in the Civil Aviation Ministry, which I am part of now, also has taken that by 2040 there will be about 200 functioning airports in India. Delhi and Mumbai will have 3 international airports. Right now we are constructing the second one. But as I see the demand by 2040 in MMR region, about 180 million passengers. And existing airport would cover about 50 to 55. We are targeting about 90 to 100. And still there is scope for another airport in the MMR region. And they want to cover almost 220 destinations with airports, helicopter, water aerodromes, and all put together. And there is a lot of push in our budget. If you all monitor our budgets, there is a lot of push given to the infrastructure. The capital outlay itself is almost 33% higher than the previous year. Railways have got a big push of 2.4 lakh crores. And they also put an infrastructure finance secretariat where, and government has decided to now continue the 50-year interest-free loan to the state governments for 1 more year to spur that investment in infrastructure. So they are enticing the state government to go take that loan to spur this infrastructure growth and incentivize and complement the policy actions with the almost 1.3 lakh crore has been allocated for that. Now coming to our Adani Group, you have heard about our group, but our Adani Export Limited, it's an incubator for many, many businesses. It's a flagship company and we take care of the new industries under a company called ANIL. We have a data center, we have airports, we have roads construction, the materials, we have copper, aluminum, PVC, and we have also mining business. And the direct to consumer, we have Adani Wilmar, and we have also taken over NDTV, where we hold 64% now. And we also have Adani Digital Limited. Is about 100%. These are all under one umbrella of incubator. The whole thing is that this holding company keeps incubating the new businesses under it, and one by one gets listed. The holding is listed, and the SPVs under it are nurturing. And once they are ready, like next probably on the listing will be Airport Holding. We have another independent business of renewables, AGL, we have a gas discom,
And we have a transmission and distribution business. We have also PPP power, IPPs. We have transport and logistics. And in that, APSEZ is our another flagship company, along with our investment in Australia, Queensland Export Terminal. We have now into cement business, and whatever we take, we want to be at least number one in India, and then probably we have very clearly focused on our targets. And airport itself, we have large targets. We serve about 22% of domestic traffic now, and about 28% of international traffic we are serving. And together, we want to serve about 200 million passengers. And if you are interested and time permitting, we can show you a slide on Navi Mumbai Airport. Are you all interested? Oh, there it is. This is the airport which is coming up. This is the master plan where about 100 million, we are targeting about 90. So there are 4 terminals. All terminals are interconnected with the APM there. You can check in any terminal going forward. You can take an underground train and go from one terminal to another terminal. And there are 2 runways, as you see, south and north runway. Generally, each runway can do about 45 ATMs per hour, which translates to roughly about 45 million passengers. But capacity of runway itself is not sufficient, so it takes what happens in the air to start with 34,000 feet, coming down to 10,000 feet. You are cleared to take a runway. So clearing the runway, clearing the rapid exit, clearing the taxiway, getting onto the contact stand and getting turned around, all that decides the capacity of an airport. But what you see is the master plan here, where we'll also play a connectivity video going forward, where a lot of work is happening. Almost 80% of the land is open to air. And how this land has been chosen, generally on a location selection, you see that the travel time for domestic passenger is between 45 minutes to 60 minutes, and for international, not to exceed 2 hours. And then you locate. But when you locate a land like this, it has to be at least 5 to 6 kilometers in the length and minimum about 1.8 to 2 kilometers in the width. So that's how this land has been selected. But this was a very marshy land with about 10 villages inside and almost more than 3,000 structures inside. So CIDCO has done being a government, have done a tremendous job in rehabilitating the people and finally making this land available. But when we came in July, still about 45 temples were there and about 227 structures. And even now we are working with a temporary boundary wall. But all of you know the challenges of greenfield, any greenfield project that comes up by itself in India. But once the land is secured and you have the environment clearance, and then you can and then you start progressing. But typically we have this habit of changing design, and it happened with us as well. Earlier this was 60 million, now we have been asked to do 90 million. Cargo has moved from 1.5 to 2.5 million per annum. And now we are finally done with the design, and we will show you some slides going forward. And in the phase 1 of this project, what you have seen in the past would be ready by 2040 or maybe earlier, because the demand seems to be much better than expected. This is our present phase, where we will handle about 20 million passengers and about 500,000 of cargo with the runway south. But so this whole land still has a mountain called Ulve. Almost people have been resettled. There is nobody now living on the site. But mountain is still being taken out, and the entire
Mountain has been used the rock fill method for construction of tarmac, runway and other establishment in the airport. We have not brought any sand or any other material from outside other than steel and cement. We are going to use all electrical vehicles. We have very large storage tanks for water recycling and rainwater harvesting. And and we are deliberately moving towards the mass rapid transit system, where this airport will have metro network coming from west and east both. And you can come to this airport by metro. Probably that would be called Line 8. Right now, about 14 metros are being developed by MMRDA and the other bodies. And the entire skyline of MMR region, I see changing. Probably by 2028, you don't have to walk more than 800 meters to 1 kilometer to take a metro in this region. And there's a big push. You all complained about this speed today, and speed is the reason that we are all complaining, because brownfield expansion has its own challenges, and all these metros are, other than probably which are going underground in tunnel systems, you have this obstacle that you see, and rainy season being toughest part, you would have really cursed your journeys when you take longer on the roads now. But government is pushing a lot of things very fast. By 2024, I think line 2A, 2B will be ready, line 2A, 27 is already there, and passengers using those metros are tremendously enjoying, and the growth is very fast. Now, since time is less, I will also play this connectivity that you will see, where what it takes to build a large infrastructure like this airport. And apart from what I do within my 1160 hectares, what is very important is how I am connected through the roads, railway method, railway being suburban, metro, high speed, and also the water mode. This is a very ambitious project. Can you play the connectivity part, please? Technology challenge. Anyway, gentlemen, while they're still playing, I would like to share that whatever you want to achieve can be achieved. And personally, I've been the CEO from the age of 39, and it's just that the risk appetite that you have within you, that fearlessly you can progress. A lot of speakers have already spoken how you should go about choosing your career path, and how should you change jobs, and especially change jobs. I have been advising people that when you have a choices between career, finance and family, if all three are met, you can change the job. Similarly, the mindset people that talked about, it's the entire stress of today is the conflict between your mind and your intellect. So as long as your intellect is higher, you keep listening and take choices that come from the intellect, you will be stress-free. And personally, I have applied that. And to be a leader, you also have to be a good delegator. And in spite of all the responsibilities, I still find time for my personal improvement. And you apply that Pareto principle that 80% of the job you will get it done. And it does happen that as you delegate, you probably will be in a directorship role first, then 50% delegation, 100% delegation, then you say, okay, boss, you get this job done, keep me informed. So once you develop that kind of team, you can achieve wonders. And luckily, I have good team. And we will deliver this project by 2024 December that we are talking about, provided this connectivity that could come up. And
We welcome any one of you who want to know more about the airport. Please plan a visit. I would request the principal to organize a tour. And you should, seeing is believing, you should see and then make up your career. And you should, there are a lot of takeaways for myself also from today's, whatever 1-2 hours I sat through. I now feel my student days are coming back. And being among youth like you is always a charge up. One thing I want to share, Commander Jaitley was talking about resources, having visited many countries. In Germany, once I faced this, that not me, somebody was wasting food on the plate. And they were charged for wasting food 50 euros, fine. And the statement was the resources, you may be rich, but the resources belong to the country. Gentlemen, also among all the vows that you have taken today, please also take a vow of not wasting food. Unfortunately, from farm to the fork, because of logistic challenges and in between, we lose almost 40% of the food. But at least on the table, which is about 20% wastage, you do try your best, that there are a lot of deserving people who would want that food and do not waste it, even if you can afford to waste it. Okay? That is my last message. Thank you very much. Located in heart of Mumbai metropolitan region, Navi Mumbai International Airport being developed by Adani Airports shall be one of the largest airports in the world and is planned with high-speed multimodal transport connectivity by expressways, highways, arterial roads, metro, suburban and high-speed rail, along with waterway connectivity to ensure fast movement of passengers and cargo from catchment areas in Mumbai metropolitan region to this greenfield airport. Mumbai Trans Harbour Link, a 22 kilometers long bridge from Severi, providing high-speed, signal-free road connectivity from South Mumbai to Navi Mumbai International Airport, enabling travel time of less than 40 minutes, is rapidly progressing towards its completion by December 2023. The existing Sion Panvel Expressway connecting to Palm Beach Road and Amra Marg provides second high-speed road connectivity option from Mumbai to NMIA. Palm Beach Road also provides fast road connectivity from Thane and northern Navi Mumbai to NMIA, and this shall be further enhanced in future through a dedicated elevated road link from Palm Beach Road to the airport. Sion Panvel Expressway, connected to NH4B, provides eastern connectivity to NMIA, serving passenger catchment of Thane, Kalyan and Pune. While State Highway 54 and Amra Marg provide connectivity to NMIA from JNPT and southern Navi Mumbai. In addition to road connectivity, NMIA is planned with metro rail from Mumbai via Metro Line 2 extending from Mankhurd to NMIA via Palm Beach Road, and by Metro Line 8 from existing Mumbai Airport. The under-construction Navi Mumbai Metro Line 1 from Pendhar and Navi Mumbai Metro Line 2 from Taloja shall provide access to the eastern passenger catchment of NMIA. CBD Belapur Uran suburban rail connectivity to NMIA, beneficial for employees and staff, is already operational, with its Targhar station located close to NMIA. To enable truly multimodal airport connectivity, a water terminal is planned close to Navi Mumbai International Airport in Panvel Creek, offering water transport connectivity to passengers and cargo to this airport from Mumbai and surrounding coastal region. With this multimodal transportation network, Navi Mumbai International Airport stands well equipped with robust, high-speed multimodal airport connectivity from all parts of Mumbai metropolitan region to serve its eventual phase capacity of 90 million passengers per year. Thank you, sir, for that insightful session that delved deep into the nuances of the changing infrastructure in India. Your session had multiple takeaways and has really motivated our students.
I'd like to now call upon stage our Vice Chancellor of our university, Dr. Hemlata Bagla, to felicitate our keynote speaker. As well as your attendance, all right? We break now for lunch and we will be back here at 2 p.m. sharp for the beginning of the next session. Thank you.